Good evening to all my dear students. I welcome you all on your channel, that is Shine in Law with Dr. Mithun. Today we'll discuss law as an instrument of social change, a topic from Law and Social Transformation in India. Now, both the concept, that is law and society, they are inseparable from each other. Rather, they go hand in hand. तो सोसाइटी और लॉ दोनों एक साथ चलने चाहिए, क्योंकि सोसाइटी को लॉ की ज़रूरत होती है और लॉ कभी कभी एज़ पर द रिक्वायरमेंट ऑफ सोसाइटी वो वहाँ पे अपने आप को चेंज करता है. सो ऑन दिस पर्टिकुलर आस्पेक्ट वी विल डिस्कस इन टुडेज वीडियो. नाउ, जहाँ तक सोसाइटी जो है फ्रॉम द प्रिमिटिव एज और फ्रॉम द एंशंट पीरियड, सो कस्टमरी मैनर में डेवलप हुई है. एंड व्हेन वी सी the development of society in the customary manner, the base of that society was the morality. And so on the ground of morals, the then society was developed. लेकिन जैसे जैसे सोसाइटी डेवलप होती है, आगे आती है, that morals they replace with the concept of law. So in the modern philosophy, when society accepted the concept of state, that state started to make the law. And so the morality or the customary norms replace by the concept of law. And so if you want to change any existing custom or the behavior in the society, so it should be changed by the instrument of law only. So आज के सिनेरियो में हम देखते हैं कि सोसाइटी के बिहेवियर को आपको अगर चेंज करना है, उसको अगर रेगुलेट करना है, तो थ्रू लॉ ओनली यू कैन चेंज दैट बिहेवियर और यू कैन चेंज दैट पर्टिकुलर कंडक्ट ऑफ मेंबर्स ऑफ सोसाइटी. एंड सो लॉ जो है ये इन दिस मॉडर्न डेमोक्रेटिक एरा one of the most important instrument for the social change or to control the behavior of the society or to regulate the conduct of society, ये यहाँ पे रिकॉग्नाइज होता है. नाउ, अंडर दिस law and social transformation, the very object of this particular subject is nothing but to verify the social problems, to ascertain the social problems, and to find out the viable solution for that social problems through legal approach. That is the very basic concern of this particular topic. तो जहाँ पे हम अंडरस्टैंड करते हैं कि लॉ एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल चेंज, वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट देयर आर टू मोड्स ऑफ चेंजिंग द लॉ. One, that is law change the society itself, and second, that is the society change the law. So दोनों मैनर में हम इसको देख सकते हैं कि कभी कभी लॉ सोसाइटी को चेंज करता है और कभी कभी सोसाइटी लॉ को चेंज करती है. एंड सो इट मीन्स दैट a law is made by the society according to its requirement by its democratic institution, जैसे लेजिस्लेचर है या फिर जो कस्टमरी नॉर्म्स हैं उसको एडप्ट करके सोसाइटी जो है वो लॉ को शेप देती है, उसको बनाती है. सो वी कैन अंडरस्टैंड, जैसे ट्रेडिशनल कस्टम्स है, प्रैक्टिसेस है, कल्चर है, उससे लॉ रिकॉग्नाइज होता है. एंड थ्रू दैट वी आर अंडरस्टैंडिंग कि सोसाइटी इज एक्चुअली कॉन्ट्रीब्यूटिंग in making the law or in the development of law. And so जहाँ तक हम लेजिस्लेचर का काम देखते हैं, तो लेजिस्लेचर का जो बेसिक फंक्शन है दैट इज टू इनैक्ट द लॉज.
and that laws must be according to the need or desire of the society. So legislature needs to take into account what are the sentiments of people while enacting the laws. दूसरा एक ऑर्गन है स्टेट का, जिसे हम जुडिशियल ऑर्गन बोलते हैं. सो जुडिशरी, उनका भी एक बेसिक फंक्शन है, दैट इज टू इंटरप्रेट द लॉ. सो व्हाइल इंटरप्रेटिंग द प्रोविजंस, they should see that whatever enactments are there or whatever laws are there, that laws must be constitutional, moral, fair, just. And if the laws they are moral, fair, constitutional and just, they can validate that particular laws or enactment in the interest of society. But if they are not so, or if they are unconstitutional, immoral, then the Supreme Court or the judicial organ is empowered to declare such particular laws as invalid and unconstitutional. So when the society set the law in the form of enactment or custom, it can be said that the society has changed the law. तो जब सोसाइटी ही सेट करती है कि भाई कौन सा इनैक्टमेंट होना चाहिए या कौन से कस्टम्स लीगल सिस्टम में रिकॉग्नाइज होने चाहिए, तो हम उसे बोल सकते हैं कि सोसाइटी इज हैविंग अ पोटेंशियल टू चेंज द लॉ. जैसे राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005, बेसिकली लेजिस्लेचर ने इस एक्ट को बनाया है, बट द सोर्स और द फोर्स बिहाइंड द मेकिंग ऑफ दैट एक्ट was of the members of civil society. And so in that way the society sometimes set that particular atmosphere or that particular law, and then parliament is making or enacting that particular legislation. In the same manner, in the customary norms like Hindu marriages, we adopted Saptapadi in the Hindu Marriage Act 1955 as a very requirement for the solemnization of Hindu marriages. Now this Saptapadi is also the customary norm which rightly incorporated, adopted, enacted by the parliament while making the Hindu Marriage Act 1955. So this is also, we can take it as an example in which how society is setting the law and how society is making that particular rule as per their requirement, and on that basis the legislature is enacting such rule in the form of law. In the same manner, when we understand that जो रूल्स, जो लॉज कस्टम से आते हैं लेकिन जो रीजनेबल है, जो फेयर है, जस्ट है, उसे हम एज अ लॉ अडप्ट करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं. लेकिन वही कस्टमरी प्रैक्टिसेस, वही अगर रूल जो सोसाइटी से आते हैं, लेकिन वो कस्टमरी प्रैक्टिसेस, वो रूल अगर इमोरल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, अनफेयर है, तो इन दैट पर्टिकुलर सर्कमस्टेंसेस it can be declared as a void or unconstitutional by the law itself. And that we can understand, for example, from the sati practice which were followed in British India. Now from that we understand that law जो है वो सोसाइटी के इमोरल कस्टमरी नॉर्म्स को प्रोहिबिट कर सकता है, प्रिवेंट कर सकता है. एंड इसके लिए द देन गवर्नमेंट वॉज इनैक्टेड सती प्रोहिबिशन एक्ट, एंड थ्रू द लेजिस्लेटिव इनैक्टमेंट वी आर एक्चुअली कंट्रोलिंग, रेगुलेटिंग, प्रोहिबिटिंग द सोसाइटी फ्रॉम प्रैक्टिसिंग दैट पर्टिकुलर सती. सो कभी कभी लॉ जो है वो सोसाइटी को मैंडेट दे सकता है, अगर सोसाइटी इज फॉलोइंग the practice which is immoral or the practice which is unconstitutional, that we need to understand.
एंड ये दोनों तरीके से जैसे लॉ सोसाइटी को चेंज करता है या सोसाइटी लॉ को चेंज करती है, ये दोनों तरीके से हम अंडरस्टैंड करते हैं कि इन दिस प्रोसेस देयर कैन बी अ ट्रांसफॉर्मेशन एंड दैट इज द सोशल ट्रांसफॉर्मेशन कैन बी रिकॉग्नाइज इन द लीगल सिस्टम। अभी लॉ जो है वो डेफिनेट नहीं है। सो लॉ is a dynamic concept and it changes according to the demand of the society or according to the needs or the circumstances or situation what newly existed in that particular society. And so जब हम अंडरस्टैंड करते हैं लॉ एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल चेंज, दैट सोशल चेंज कैन बिकम द लॉ। तो जहाँ तक हम लॉ एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल चेंज ये कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करते हैं, तो इसमें वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट दो इंस्टीट्यूशन हैं जो इस चेंज को रिकॉग्नाइज करती है। एक है लेजिस्लेचर, जब वो लॉ बनाते हैं एज पर द नीड्स ऑफ द सोसाइटी, एज पर द डिमांड्स ऑफ द सोसाइटी, वी आर रिकॉग्नाइजिंग दैट पर्टिकुलर लॉ और दैट पर्टिकुलर सोशल चेंज विद द हेल्प ऑफ लॉ। एंड दूसरा इंस्टीट्यूशन है दैट इज जुडिशरी। सो जुडिशरी प्रोविजंस को इंटरप्रेट करती है, स्टैट्यूट को इंटरप्रेट करती है, एंड दैट इंटरप्रिटेशन दे आर डूइंग एज पर द रूल ऑफ लॉ, एज पर द लॉ ऑफ लैंड, एंड अकॉर्डिंग टू दैट इंटरप्रिटेशन जो सोसाइटी की रिक्वायरमेंट है, जो सोसाइटी का इंटरेस्ट है, उसको प्रोटेक्ट करने का काम जुडिशियल ऑर्गन जो है वो वहाँ पे कर सकता है। सो दीज आर द टू इंस्टीट्यूशंस इन द लीगल सिस्टम विच एक्चुअली ट्राई टू ब्रिंग द चेंज इन द बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी or in the interest of the society, and they are using the law for that particular change, for that particular development. Jeremy Bentham advocated the theory of utilitarianism, and in that he emphasized the maximum or greatest happiness of greatest number. So he also was emphasized on the very interest of society which needs to be protected with the help of law or with the help of instrument of law. In our constitution, article 368 is provided, which gives the flexibility on the part of parliament that they can adapt the procedure as provided in article 368 of the constitution, and whenever there is a requirement they can change, they can alter, they can amend any part of the constitution, provided they should not destroy the basic structure of the constitution. So these are the very indicators through which we understand that law must be ready to alter itself or to change itself if there is a need, if there is a necessity in the welfare interest of the society. And society also should deviate from such conduct which will hamper the collective interest of the society. And if society is conducting themselves against the collective interest of society itself, then the law can regulate or law can control the behavior of the society, so that the civilized society, the society in which the very development, peace, harmony can be maintained, that is the very object of this particular concept when we understand law as an instrument of social change. So I hope this concept is clear with you. Thank you for watching this video. Please like, share and subscribe to my channel, and keep watching my channel. I thank to all of you for watching this video. Thank you very much.